Welcome everyone, and today we will continue with the discussion and understanding of what is your finance analytics and what all are the importance and needs. So, we have already discussed a lot about finance analytics and we tried to set a base of what is finance analytics, right? So, if we continue it, there are few things which we were left to discuss. One of the very important point which we have to discuss is that how experts use this finance analytics or how they use the data which we have, right? So many experts consider predictive analysis as your essential element in digital transformation of finance. So now see, if you talk about the analysis, we have two types of analysis. Can anyone tell me what are the two types of analysis? One is predictive. What is the another one's name? Descriptive. 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 Any other? One is also there prescriptive. Prescriptive is also there. है ना? One is even your concurrent, right? Concurrent जो चलता ही रहता है, right? So there are different types of analytics. The one is your predictive, descriptive, concurrent, and many more. So predictive क्या होता है? We predict. What we predict the past. Now sorry, we predict the future prediction is based on the past. Now what we do is we don't predict for like 20 years or 45 years directly. एकदम से जंप नहीं करते, इतना बड़ा प्रिडिक्शन नहीं देते. हम पहले ना छोटे छोटे प्रिडिक्शंस देखते हैं. अगर वो प्रिडिक्शंस करेक्ट होते हैं, हमारा फॉर्मूला या जो इक्वेशन है वो सेट हो जाती है, फिर उसके बेसिस पे वी डू द बिग प्रिडिक्शंस. ऐसे थोड़ी ना है कि एक साथ आपको मैं बोलूं कि आज आप किचन में जाइए एंड गो एंड कुक फॉर 100 people. You will not be able to cook it until and unless you first do it in the portion wise, है ना? पहले एक जने का सीखेंगे, फिर आप उसके बाद 10 जनों का, फिर 50 जनों का, फिर 80 का, फिर 100 का, right? Because you might not be knowing the quantities and the ratios, proportions in which you have to cook. So same way prediction में भी हम लोग है ना, पहले एक बार ट्रायल टेस्टिंग करते हैं, थोड़े थोड़े ईयर्स का लेते हैं, उनका वेरीफाई करते हैं डेटा, right? And then we when we are set with our equation, we are set with our format, we are set with the calculation method, then only we use it for the prediction of big amount of year. So experts always goes for the predictive analysis. हम predict करना चाह रहे होते हैं because we believe in knowing the future. Now the question come, why we need to know the future or why we need to predict. So this prediction is done for many purpose, right? So one of the purpose is to know that what amount of finance I have to make myself ready with, so that the upcoming expenses can be met out with ease, राइट? हम लोगों को पहले से ही अगर पता होगा कि जनाब आपको आने वाले महीने के अंदर जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, हमारा हेवी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भी कोई पतली सी चीज तो नहीं होती, मोटी चीज होती है. इट हैज टू बी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज आप उसके अंदर वर्क्समैन कंपनसेशन की इंश्योरेंस का भी प्रीमियम दे रहे होते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे होते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस, आपने जो जो फायर इंश्योरेंस, जो जो इंश्योरेंस भी है, you have to pay a big amount of insurance premium, right? So you have to be ready with that finance, because if you missed that date, if you have not paid the premium amount on that day or before that day, your policy will might lapse or you might have to pay the fine also, राइट? तो अगर आपको पहले से ही पता है कि आने वाले अगले महीने की 15 तारीख को मुझे 1 लाख का पैसा देना है, तो डोंट यू थिंक यू विल ट्राई टू मेक श्योर दैट, और फाइनेंस टीम विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दे हैव in hand ready with 1 लाख रुपीज बैलेंस इन देयर बैंक अकाउंट, है ना? इजी रहेगा, आसानी से पेमेंट हो जाएगा, एक रात पहले टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, right? So this is one of the example which I have taken, that why we need to do the predictive analysis. And this predictive analysis becomes the base, it becomes one of the base to make our digital transformation of finance.
right? Because now you see, majority of the companies, if I talk about majority of the even small scale firms, are now on your digital platforms, right? They believe in the digital transformation. They have, transformed themselves into digital platform. That's why there are many apps which are coming up into the market, like your खाता खोलो, your है ना बैलेंस बनाओ. बहुत सारे ऐप्स आए, आप लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट सुने होंगे कि छोटे व्यापारियों के लिए है, राइट? सो व्हाट आर दीज आर दोज प्लेटफॉर्म्स गिवन टू द businessmen and women so that they can go digital. Because we know one thing, that digital thing cannot be, window dressed that easily. A layman like you and me, we cannot do the, window dressing that easily until and unless we have a good knowledge of how to do the window dressing. So एक तो क्या है ना, it reduces the chances of manipulation of data. नहीं तो आपको याद हो, अगर पुराने जमाने में जब हाथ से हम लोग अकाउंट्स लिखते थे, राइट, देर आर मेनी ऑफ दी, स्मॉल शॉप्स जो घर के अंदर ही आपकी दुकानें बनती ना, वो हाथ से ही अभी लिखते हैं, बिल भी वो वैसे ही बनाते हैं, वो डिजिटली नहीं गए, दे डोंट हैव दैट बार स्कैनर एंड ऑल, राइट? तो वो क्या है, कभी भी चीटिंग कर सकते हैं ना. वो अपना सेल्स ज्यादा दिखा सकते हैं, या वो अपने एक्सपेंस ज्यादा दिखा सकते हैं. उन्हें करना क्या है, जीरो ही तो बढ़ाने हैं, राइट? एक फर्जी बिल आराम से बन जाएगा. बट टू रिड्यूस दैट थिंग, we need to go into the digital transformation. And when you are on digital platform, when your all records are digital, when you, have recorded the transaction from placing the order to the sales of order, everything is on digital platforms. Your data is on fingertips. You can easily analyze it. नहीं तो पहले तो आप उन डेटा को पंच इन करो, फिर उन पंचिन डेटा को रिफाइन करके क्लस्टर्स बनाओ, और फिर एनालिटिक्स करो. और एक होता है आपके पास डेटा है स्प्रेडशीट में, आपने उसको सीधे फॉर्मूला लगाया और एनालाइज कर दिया और आपका काम हो गया, या आपने डैशबोर्ड बनाया और आपका काम हो गया, right? So that is why you need to have the predictive analysis. For that you need to first transform yourself onto the digital platforms. And that is why nowadays, if you see, there are lots and lots of, campaigns running all around to go digital, to be digital. आप लोगों ने अगर ad देखे हो तो ये मतलब एक ad आता है, अभी टीवी पे आ रहा था कल परसों, आई वाज वाचिंग दैट. उसके अंदर ना एक है ना दुकानदार है जो पेपर पेन वाली नोटबुक के ऊपर सारे काम कर रहा है, और एक है जो अपने ऐप में ही सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है. वो जल्दी घर चला जाता है, और दूसरा जो वो रिकॉर्ड ही मेंटेन करता है. सो दे आर ट्राइंग टू, publicize going digital. Yes, we have lots and lots and lots of drawbacks. We have lots and lots of limitation. Number one, अगर आप digital platform use करते हैं तो number one thing you need to check is that are those app working on internet. क्या वो इंटरनेट ऑनलाइन ऐप है, या वो ऐप जो आपके पास है, दोज ऐप आर योर ऑफलाइन एप्स. यू अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ है, या आपके है ना लैपटॉप पे आपने लगा रखा है, तो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है. नंबर वन थिंग टू बी टेकन केयर. Number two, you need an expert training to learn how to use those, apps or these softwares. है, एप्स तो आप फिर भी चलो वीडियोस देख के कर लो, बट जो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हम अभी ओरेका और ये सब पढ़ेंगे आगे आपके कोर्सेज के अंदर, for those you need training. You need to learn, and you need to, have that understanding that how to use those softwares, how to, analyze the data, how to punch in the data, how to generate the conclusion statements, right? तो उसकी ट्रेनिंग आपकी बढ़ जाती है. Then you have to make sure that your data is safe, right? The biggest challenge of going digital is your, hacking and different types of these scams and data leak jo ho rahe hain and all. You have to make sure that your data is safe. The आपके competitor को आपकी चीजें ना पता चल जाए, या कहीं आपको ही आपके quotations के ऊपर कोई blackmail ना कर ले,
right? So that is also one of the concern. And if you see the survey, I was actually reading one of the research papers, and in those research paper, the authors were trying to find out the reason that why the rural part of India is still not adjusting with the digital platform. And one of the only reasons that which they highlighted was the security. They were not having the trust, or they are still not able to build that trust on digital platforms. They feel हमारा डेटा चला जाएगा तो हम लोग को बर्बाद हो जाएंगे, वो myth है. And we have to crack that myth. We have to prove them that no, your data is safe. और ये काम एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस लिटरेसी प्रोग्राम से होगी, और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ये डेटा एनालिटिक्स की सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उनको भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बना के उनको ये बात लोगों को बतानी होगी that your data is safe with us, right? We will not leak it, we are legally bound to do it, and if we do it, we will be also facing the replications, right? And you will also get the compensation, so don't worry about that. So they have to learn how to trust on the technology, and that trust will come. It will come. It is not like that कि trust build नहीं होगा, पर टाइम लेगा बेटा. कैसे? आज आप किसी एक एग्जांपल लो, एक फार्मर है, दैट फार्मर इज जस्ट सिंपली लिटरेट, इट इज नॉट एजुकेटेड, दैट फार्मर इज नॉट एजुकेटेड, बट उसके बच्चे तो अब एजुकेट हो रहे हैं. They will have the knowledge, they will be aware about these softwares, they will be aware about these systems. उनको डिजिटल होगा, उनमें से कोई तो इनिशिएट लेगा और कोई तो अपने पेरेंट्स को समझाएगा, या जब वो बिजनेस रन करेगा वो अपने उसमें डिजिटलाइजेशन लाएगा, और तब हमारा है ना आएगा. If you see nowadays, the generation of you and me is taking our family business and heritage to digital platform. Many of the hotels, restaurants, and your tea shops हो गई या आपकी sweet shops हो गई, they all have now joined their hands and they are working on getting themselves digital. और ये नया जनरेशन लेकर आया. क्यों? क्योंकि we trust on technology, we have a good understanding and learning of technology, and we are able to convince our old people that please trust on us and technology, और एक बार रिस्क लेके देखो, कोई बुराई नहीं, right? So this initiative have to be done, and that is what these are the basic important things you should know. क्योंकि अगर आपसे पूछे that what is financial analytics and what are the limitation, so these are the somewhere down the line the limitations which I have discussed with you today, that क्या क्या आपके limitations के अंदर आ सकते हैं. These all are the trust issues and all are the part of your um, limitations of going digital, the financial data going digital. Any doubt till here? Did you understood what I'm trying to teach? Yes, ma'am. Okay. Now the point which we have to discuss today is your this one, that the application of analytics is crucial in financial service and other data intensive field. So application plays a very vital role, and that's why we say that the when you have to apply, when you have to use a particular software, you need the help of an experts. You need to undergo the training, you need to undergo the orientation programs of those softwares, right? Financial service businesses, including your investment banks, generate and store more data than just about the any other businesses in any other sector, mainly because the finance is the transaction heavy industry. So it is one of the fact which I'm sharing, that the financial services businesses, including your investment banks or normal banks जो भी हैं आपकी, like all those services agencies or the businesses, maybe your underwriters or maybe your in a portfolio management companies and all, they use these softwares, and they are the one of the heavy consumers of these types of transactions, the financial transactions which they are generating. While banks have for many years used the data to measure and quantify risk, data analytics are now taking on the role of influential internal consultants responsible for communicating senior executive key insight on how to improve the organization's overall profitability,
right? So banking people from, I think, last 1 decade, 2 decade, they are on the total digital platforms. Their working is totally centralized, and they have their own systems, robust system, and they are working on it, right? And they are using the data in measuring the risk. Now, what kind of a risk they might be measuring? नंबर वन, कि हमारे जिन जिन को लोन दिया है वो लोग हमें प्रॉपरली दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या रिस्क है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, कितना परसेंटेज अमाउंट है, राइट? क्या हम इंटरेस्ट बढ़ाएं? अगर बढ़ाएं तो क्या रिस्क है कि लोग हमसे लेंगे नहीं लेंगे, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? हम घटाएंगे तो हमारे कितने कस्टमर्स बढ़ जाएंगे? That all type of quantifying of risk, data analytics. And data analytics is used by the bankers to design the new products, right? If you have seen, you would have observed by yourself that now the insurance company or the insurance agencies are coming up with the new types of insurances in which they try to cover up the expenses of the covid or the upcoming viruses, if any. तो वो क्या किया उनने? उनने अपॉर्चुनिटी को नॉकअप किया, डेटा एनालाइज किया कि अगर हम ऐसी पॉलिसी लाते तो कितने कस्टमर्स जो है वो अपनी इस पॉलिसी को पकड़ना चाहेंगे, या कितने नए कस्टमर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या प्रीमियम अमाउंट रखें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें क्लेम को मीट आउट करना पड़ेगा, और क्या प्रोबेबिलिटी कि क्लेम अभी कभी आएगा ही नहीं. That all data analytics, that all designing of the new policies, new product line, they are on the basis of the data analysis, राइट? आपके सर्वेज होते हैं, उनमें फिर आप इनकम ब्रैकेट्स में सर्वेज को put in करते हो, we will learn all those things. But this data analytics plays a very vital role in your banking and your insurance and other financial service area. Today's financial institutions not only analyze structured data such as marketing or trading data, but also unstructured data, which can include data from the news outlets, social medias, and marketing materials. तो जो आप स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा यानी आपके खुद के रिकॉर्डेड डेटा, और या फिर आपने जो है ना सर्वे किया है और उससे कलेक्ट किया है. अनस्ट्रक्चर, आपको कोई न्यूज आर्टिकल के अंदर डेटा दिख रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपके रेलेवेंस में है, तो आपने वो पिकअप कर लिया, उससे सिमिलर आर्टिकल्स के साथ कर लिए, राइट? या कोई न्यूज चैनल्स के ऊपर आउटलाइंस चल रही हैं उसके ऊपर कर लिया, सोशल मीडिया के न्यूज़ के बेसिस के ऊपर आपने कर लिया. दैट ऑल बिकम्स योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. So we are using both type of data, right? So you should know that what type of a data we are using. We are using both structured and unstructured data for the analysis in your financial institutions. Any doubt, any question, anything you want to share with me till this point of time? Clear till here? Can Yes, we ma'am. move ahead? Yes, ma'am. We can move ahead. Okay, so now let's discuss that why financial analytics is important. Now we have understood what is financial analytics. We have understood that what advantages we have, but why is it so very important that nowadays it's a new stream of education that you have to study, or you need to have a degree in the financial analytics. Number one, today's business needs timely information that helps business people to take important decisions in business. आजकल आपको everything is on the data analytics. You need to click on the data and you need to know that whether you will be able to launch this product today or not, how many customers might go. तो आप अपनी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि अगर हमने आज अगर ये रिलीज किया तो इतने जने जो है वो ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते. डू यू नो, इवन व्हेन द पिक्चर्स आर रिलीज्ड, आप लोगों की जो मूवी रिलीज होती हैं, दे ऑल्सो यूज द एनालिटिक्स, राइट?
दे ऑल्सो यूज द फाइनेंशियल एनालिटिक्स ऑल्सो, कि हम इतने करोड़ों की मूवी बना रहे हैं, तो इतने जने अगर हम लोगों के ऑन एन एवरेज है ना अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो इतना रेवेन्यू आ जाएगा, हमें कमीशन में इतना देना पड़ेगा, टिकट मूवी थिएटर्स में इतना रेवेन्यू आएगा, उनको उतना कमीशन देना पड़ेगा, कुल मिला के हमारे पास कितना रेवेन्यू आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें है ना ओटीसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला जाना चाहिए, या फिर है ना हम लोगों को है ना ट्रेडिशनल जो अपने थिएटर मूवी थिएटर्स उधर जाना चाहिए। वो एनालिसिस भी आपका फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे अगर ले रहे हैं तो दे आर डन, दे आर डूइंग, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइड कि अच्छा ठीक है हम लोग अमेजोन पे रिलीज कर दो, या नहीं अभी वेट करो, कोविड का पूरा सीन चला जाएगा तब मूवी रिलीज करेंगे, तब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। So nowadays you need information, and that information is collected from the data. डेटा से ही आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, यू नो दैट प्रोसेस राइट। आप लोगों को पता है ना कि डेटा होता है, डेटा से आप रिफाइन करके आप उसमें जो आप अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग, and that process is very important, and that's why we need to have the a good hand on our financial analytics. Every business should have a sound financial plan and forecast to leverage the businesses. If you are planning up to start your new venture, or you want to have a new product launch, or you want to merge, or you want to liquidate and shut down your business, for all that planning, for all that forecasting, for all that calculation, you need financial data. And financial analytics supports you out to know all those decision making and planning and forecasting. The emergence of new business models, the changing need of the traditional financial department, and the advancement in the technology have all led to the need of the financial analytics. So the new models we are coming up, right? The आजकल तो बहुत सारे ऐसे businesses हैं, you know that they are on the basis of app. Your your gaming companies, the mobile phones which have the games, वो gaming companies, they all are on the digital platform, technological database के ऊपर है, तो उनको भी तो financial analytics की जरूरत होगी कि फाइनेंशियली हमें अपनी प्राइस क्या रखनी है। फ्री रखते हैं तो कितने कस्टमर्स हमारे होंगे, कितने लोग यूजर्स आएंगे हमारे पास, अगर हम उसे पेड रखते हैं तो कितने यूजर्स रह जाएंगे, फ्री में क्या क्या सर्विसेज देनी है, पेड में क्या क्या सर्विसेज देनी है, राइट? ऑल दोस डेटा एनालिटिक्स इन टर्म्स ऑफ मनी or to support the monetary decisions are your financial analytics. And nowadays you have n number of platforms through which you can do your financial analytics. It helps in shaping up tomorrow's business goal. You can also improve the decision making strategies for your business. Of course you can do it. If you know कि आने वाला टाइम आपके बिजनेस के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा, तो you will definitely try to revise your strategies. You will definitely try to implement the new policies or the new strategies, or come up with a plan B. You will not stick to that plan A, because plans or the planning are supposed to be flexible. You have to shape up themselves as and when the time comes, or you analyze the situation or the environment, right? So you have to make sure that when you have any financial data and it is giving you some important information, so you mold your decision making strategies in such a manner, right? Then there are n numbers of advantages. Few of them is that the financial analytics focus on the measuring and managing the intangible assets of their organization, such as the cash, machinery, etc. It gives a deeper insight about the financial status of the business and improve the profitability, cash flow, and value of your business. Financial analytics will help in making smart decisions to increase the business revenues and minimize waste of the businesses. Accounting, tax, and the other area of finance are having data warehouse, which is combined with analytics to effectively run the business and if achieve the goals faster. So, what is data warehouse, by the way? What do you mean by data warehouse? Ma'am, where data are stored. Datas are stored, right?
अब उस डेटा वेयर हाउस के अंदर से इट इज लाइक अ मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, इट इज वन ऑफ द Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ योर मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें आपका सारा एक बार को डेटा स्टोर होता है, फिर उसमें से आपको जो जो रेलिवेंट लगता है ना वो फिल्टर लगा लगा के निकाल देते हो. You know how to use excel, so let me teach you from the point of view excels में let's imagine that आप लोगों के ना thousands तक में है ना rows and columns जो है वो hundreds तक में भरे हुए हैं, right, and now you want a very refined data. So what you are going to do, you will put the filter, राइट. तो सेम वे वेयर हाउस इज दैट एक्सेल शीट, और फिर उसमें से आपको जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए आप उसको फिल्टर लगा लगा के उसमें से निकाल लो. अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू वांट टू हैव द नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट that how much you had paid in past 5 years, and how much prediction you want, you are doing the prediction that how much you might be paying in the upcoming year. So वो क्या है, आप सिर्फ टैक्सेशन की ही चीजों के ऊपर देखोगे और फिर उसका एनालिटिक्स करने की कोशिश करोगे. So it is like a, entire data warehouse helps you a lot to get the refined data so that you can analyze your work, right? Any doubt till this point to anyone? Ma'am, first one, I have a doubt like how financial analytics helps in managing the machineries. Okay, second. Ma'am, second one is that even by having lots of numbers of analytics implementations in real businesses, then also we see that many organizations suffer loss and come to an end that they shut down completely. ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ दैट हाउ फाइनेंशियल एनालिटिक्स हेल्प्स यू आउट इन मेंटेनिंग द मशीनरीज, है ना, आपका मशीन्स के अंदर वो कैसे वो आपकी मदद करती है. नंबर वन, let me use my notepad. हाँ. See, financial analytics, where what you are doing the analytics. Right now, we are talking about the machines and the other heavy assets. Right? You might be having purchasing cost. Right? Then you will be Yes, ma'am. calculating depreciation. उस हिसाब से you will be able to calculate the life and the use and existence and everything. राइट, आपको आपकी नेट एसेट्स पता चलती रहेगी. अब लेट्स सपोज यू नो दैट योर मशीनरी विल गेट एब्सोल्यूट आफ्टर 5 year, सो डोंट यू थिंक यू विल बी ट्राइंग टू सेव द मनी इन सच अ फैशन कि 5 साल बाद मैं वापस से ये नई की नई मशीन खरीद सकूं विद द लेटेस्ट मॉडल, Yes, राइट. ma'am. तो उस हिसाब से हम मशीनरीज के अंदर देखते हैं. या मशीनरी खराब हो गई तो उस मशीनरी के खराब होने के क्या रेशियो है, राइट, फिर वो खराब होने पे क्या कॉस्ट इंकर होगी, उसको मैं कॉस्ट को इंकर करने का मतलब आई शुड गो फॉर द रिपेयरमेंट, रिप्लेसमेंट और द बाइंग ऑफ अ न्यू मशीनरी. विच वन इज बेनिफिशियल फॉर मी. तो मैं क्या करूंगा, बजट बनाऊंगा, या फिर मैं उसका क्या करूंगा, मैं आपका कैपिटल बजटिंग के अंदर चला जाऊंगा. मैं एनालाइज करने लगूंगा तीनों के तीनों प्लान्स को कि मैं मशीन को रिपेयर कराऊं, उस पार्ट को रिप्लेस कर दूं, या पूरी की पूरी नई मशीनरी लेकर आ जाऊं, ये वाली मशीनरी बेच देता हूं और लेटेस्ट मॉडल ले आता हूं. तो तीनों को आप इवेल्युएट कर रहे हो, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए. This is how your financial analytics data help out in maintaining the assets. Clear? यहाँ पे? Yes, ma'am. Okay. Now coming to the question that after using, lots and lots of, softwares and coming up with the so much advanced version of the data analytics, still businesses incur losses. Right? And why is that so, right? So the answer is this analytics is based on past data which we will be evaluating and implementing in future or present. जो बीत गया और जो चल रहा है उसका आप एनालिसिस करके आप क्या कर रहे, प्रिडिक्शन, है ना. आज की क्लास ही हमने कहां से स्टार्ट की थी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे. यू आर प्रिडिक्टिंग बेटा, एंड प्रिडिक्शंस कैन नॉट बी करेक्ट ऑल द टाइम.
right? And if your predictions are going correct, if you are like, you decided something and your data analytics is saying something and you did it, and you are getting success as per your analysis and as per your expectation, that means you are god. या तो तुक्का है और या फिर आप गॉड है, right? Because your environment keeps on changing, right? If you see the data of I was doing a research, I did a research right now on the investment avenues which people used to use, and then I tried to find out that were they able to get the same amount of returns which they were having before covid. So I was doing the data analytics over there, that were they getting the same returns, the my people who filled that questionnaire. I was doing the research for the Jaipur people only. So the Jaipurites, are they receiving that same amount of returns from their investments which they are getting, which they were getting in the time before covid? When I was doing the analysis, it was all 90% of the data was in negative. That means that they are not earning that much of return. अब कोविड किसी ने सोचा था क्या? किसी ने भी प्रिडिक्ट किया होगा कि कोविड आएगा और सब बंद हो जाएगा, और जब सब बंद होगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे, No, ma'am. right? So this is what uncertainty. We are playing with future prediction, and future word is along with uncertainty. And when there is a word uncertainty, there come risk, right? And that is why we say we try to come up nearby to the prediction. We try to be somewhere down the line equivalent to future. We cannot predict future. We cannot be Krish. We cannot be anyone who can tell you the future. No one in this world can tell you the future. Even Doctor Strange said, no, that I will not tell you the future, just wait for that moment. Otherwise, that moment will change. Right? Remember if the end game. So you see, so you cannot analyze that data. You have n numbers of knowledge. And I'm not saying that analysis are all the time wrong. बहुत बार सही होते हैं. There are lots and lots of softwares which give you, absolute correct data or analysis, राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दो सॉफ्टवेयर. बट वो सिचुएशन के हिसाब से भी तो चेंज हो जाएगा ना बच्चे. अब किसी ने भी कोविड नहीं सोचा था, अब चलो ठीक है, कोविड नहीं सोचा, हम लोग वापस से अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करेंगे, हमने वापस से अपने है ना एम्प्लॉयज को है ना गैदर किया, हमने उनको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, कोविड चला गया है, सबने दो दो वैक्सीन लगा लिए, वी ऑल आर इम्यून, people are also in the market now, let's do the business with the full swing again, and let's again be the market leader, we will again be the at the top in the industry, and let's do it. आप सब वापस से काम करने लगे. Everything was going very smoothly. After 10 years, again you have some new virus. तो इस बार आपने क्या किया होगा? इस बार आप पहले से रिजर्व में चल रहे होगे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बाद में आता है, देन आई हैव प्लान बी. सो आप अपने ही पास्ट से सीख रहे हैं, बट एकदम से कुछ नई चीज आ जाए, सो यू विल नॉट बी नोइंग दैट, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स, कि आपके एनालिटिक्स जो है वो आप जब प्रेजेंट में या उसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करते हैं, सो यू डोंट नो व्हाट इज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट एट दैट टाइम. What is your legal environment at that time? What is the market scenario? What is the trend going on? What is the stock position at that time? आपने एनालाइज किया था बूम के लिए, पर उस समय रिसेशन आ गया, तो जब ने आपने इंप्लीमेंट किया, पूरी स्ट्रैटेजी उल्टी हो गई और आप पूरा नेगेटिव लॉसेस में चले गए, right? There are n numbers of limitation, beta, but yes, few of them I have discussed. I do hope that I have answered your question. Yes, राइट ma'am. अमित? चले आगे बढ़े. Yes, ma'am. चलो. So today, let us just start with few of the very important thing, and we are going to start up with the importance of or the main reasons of your financial analytics. So basically what I have done, I have divided your main reasons into four main categories. So first one is your business model. So your business model
also need your financial analysis, right? So now there are three types of new business models which have come up into the market, and these three models need their own different financial analysis. One is business to business, जिसे आप क्या कहते हैं, B2B, right? Then you have B2C, then you have B2E. किसी ने सुना है B2E? No, ma'am. Business to employee. This is new one, right? So homework, right? Try to find out that what do you mean by, or what is this model about, business to employee, right? And we will discuss it in the next class, that what is business to employee, the new business model which have came up, right? So we will learn about that. But if we talk about that why we need business analytics data, so first one is the business model, that which type of a business model do you have. Are you into B2B? So if you are into B2B, your data analytics will be different, and you will be needing it for the different purpose, right? If it is B2C, again different perspective, कस्टमर आ गया यानी ह्यूमन आ गया यानी कि भाई साहब आपका इन प्रिडिक्शन में चला जाता है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग ऑफ अ कस्टमर। आज उसे पसंद आ रहा है, अब नहीं आएगा। अब आपके है ना फेमस फुटबॉल प्लेयर ने अगर कोका कोला की बॉटल को साइड में रख दी, तो कोका कोला का नुकसान हो गया। क्या किसी ने प्रिडिक्ट किया था ये, कि No, कितना बड़ा ma'am. नुकसान हो गया आपके एक फुटबॉल प्लेयर की वजह से, जस्ट बिकॉज ही जस्ट केप्ट असाइड अ वन बॉटल? नो वन थॉट ऑफ इट, राइट? So what is that? This is like uncertainties. And अब क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस चेंज हो गया। वो लोग बहुत बड़े, उनने लॉसेस एक तरीके से देखे, उनका क्रैश होते हुए आ गया था एक तरीके से, अगर आप बोलो उनके स्टॉक्स, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर अनप्रिडिक्टेड अनसर्टेनिटी, दिस इज द रिस्क। कभी भी कुछ भी हो जाए। और कस्टमर है, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी मैगी, किसी ने सोचा था कि कभी मैगी के ऊपर इतना बड़ा केस होगा, कि बीच में ऐसा टाइम आ जाएगा कि मैगी को बैन करना पड़ गया था बुरी तरीके से? No one thought of it. But again, Maggie come back. That is the different scenario. But never predicted that type of time zone. तो उनका फाइनेंशियल एनालिसिस किया गया, उनके ऊपर रिसर्च की गई, उन लोगों ने अपना डेटा प्लग इन किया, फाइंड आउट किया कि कैसे हम अपने लॉसेस को ओवरकम करें, अब क्या नई स्ट्रैटेजी बनाए, उसमें कितना फाइनेंशियल खर्चा आएगा। So that's why you have your different types of business models, and based on those models, your data analytics also keep on changing. Then the second reason is changing role of financial department. बेटा पहले की बात करूँ ना, अगर मैं बहुत पहले, तो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम कुछ नहीं होता था। सिर्फ आपका काम, उनका काम होता था तिजोरी की चाबी लेके बैठना, अपने चेक वेक लेके बैठना और कैश को मेंटेन करना, और कुछ नहीं। जब कोई पैसा मांगे, एक बार वेरीफाई करो उसको पैसों की जरूरत है, पैसा निकाल के दिया, रिकॉर्ड किया, खत्म। और ये देखते रहना कि कब किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है, दैट्स इट। That was the only work of finance department long back. But now at present it has totally changed. They are the basic functions. अब उससे ऊपर आपका क्या आ गया है, आपको एनालाइज करना है कि कहाँ से लोन ले, किस चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, वहां से लेना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, शेयर्स के थ्रू लेना है, या लोन लेना है, या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से है ना जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनकॉल्ड पेमेंट है, अपना शेयर का अनकॉल्ड मनी, उससे लेना है, रिटेन अर्निंग लेनी है, खुद के इन्वेस्टमेंट से करना है, क्या करना है, राइट? एनालाइज करना है कि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को क्या प्रिडिक्शंस देने हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका क्या एनालाइज करके दूं कि वो हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करके देगा, नहीं देगा। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। The working of finance this department have totally changed from what it was very long back. And to this change need your financial analysis. आज आपके आप किसी भी फाइनेंस ऑपरेशन के हेड से या सीएफओ से जाके पूछेंगे ना कि सर आपको अभी अगले महीने कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट करना है, उसकी टिप पे होगा सर 10 साल बाद आपकी स्टॉक की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होगी, वो आपको बता देगा।
सर कल आपके है ना बिजनेस के अंदर ना थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो क्या आपके पास रिजर्व मनी है, वो आपको बता देगा कि कितना रिजर्व मनी है, कहाँ कहाँ है, सब एवरीथिंग हैज चेंज. So this changing role of finance department is also one of the reasons why we need the analytics in our finance department. Then the third main reason is business processes. The business processing the itself has changed. Right now you first go with the analytics के हिसाब से managers and executives give the green signals. One that is green signal, then you try to have the testing. After testing again you do the analytics, and when you have the very proper रिलेशनशिप, मतलब आपका डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ सब सिमिलर सिमिलर रहेगा, तब आप उसका प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और मार्केट पे जाते हैं. Right, so this is the new business processes which is taking place, and nowadays your ordering, your reordering, they are all automated. Right, you just need to punch in the data that it will get automatically ordered कि हर 2 दिन में मेरे को है ना प्रोडक्ट एक्स का प्लेसमेंट करना है ऑर्डर का, तो वो ऑटोमेटिक जनरेशन में चला जाता है. आपको रिमाइंडर्स आने लगते हैं मैनेजर्स को कि आपको है ना आज की तारीख पे है ना प्लेसमेंट मेल डालना है, आपको आज ऑर्डर प्लेस कर देना है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डेटाज एंड एवरीथिंग. सो यू नीड टू नो कि बिजनेस प्रोसेसेस चेंज होने की वजह से भी यू नीड टू हैव सम न्यू थिंग. नाउ हियर आर सम फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आंसर. What are those, like what are the risk to which the business is exposed? राइट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स क्या क्या क्वेश्चंस आपको आंसर करने में मदद करते हैं, दीज आर द लिस्ट. द फर्स्ट वन, क्या रिस्क है आपके बिजनेस में, how to enhance and extend the business processes to make them work more effectively. Then are the investments made in the right path, यानी वो आपका एनालिसिस करेगा रिटर्न्स का. Then how is the profit of the product across the different sales channel and customers. अगर मैं आपका मतलब 1-to-1 सेलिंग स्ट्रेटजी लेता हूँ, या मैं डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग लेता हूँ, या मैं इंटरमीडिएटरी के थ्रू सेलिंग करता हूँ, तीनों में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो सारा एनालिसिस करना. Which segment of the market is expected to bring more profit to the business in the future? Should I focus on the youth, or should I focus on the young adults, or should I focus on the old people, or should I focus on the college going students or the school going students? टारगेट कौन है मेरा, सेगमेंट क्या है मार्केट का, मेरा मार्केट सेगमेंट आपका जोग्राफिकली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आपका है ना इनकम के हिसाब से भी हो सकता है, आपका रूरल अर्बन के बेसिस पे हो सकता है. तो विच सेगमेंट टू टैप ऑन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आंसर्स विच फाइनेंशियल एनालिटिक्स गिव्स यू. What are the factors that could affect the business in the future? कोविड के जैसा कोई वॉर वायरस आ गया, तब मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, वॉर लाइक सिचुएशंस आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिसीज चेंज हो गई, मेरा प्रोडक्ट बैन हो गया, तो मैं क्या करूंगा. दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो टेकन इन टू द कंसिडरेशन. And the last reason is integrated analysis. You do the analysis at overall organizational level, so that you can see that आप कितने probability है आपकी survival की in the new economy or in the new changes. Right, so that is also one of the reasons why we are doing the financial analytics. The fifth one is the role of data warehouse, which we have discussed previous slide में pointers में थे, इनको explain किया मैंने. In next class we will continue with the uses, that how we use or what are the other different types of the use of the financial analytics. Till this point, any doubt, please discuss with me or share with me. Any doubt, any question which is coming up into your mind right now? No, ma'am, it's clear. Clear? All clear? Yes, ma'am. Chaliye. Thank you everyone. Thank you.